Is it visible? Hold on a sec. I'll check. I have to share my screen on StreamYard, right? Or on the Meet? Uh, I'm getting a glitch in this. Okay, so Prathamesh, technical team, like StreamYard and Teams, both are not working at a time. Okay, just give me a second. I'll figure it out. Arjun, you can just share the screen and turn on your camera in the team meeting itself. It's okay, not on the stream yet. Got it. Just a sec. So shall we start the recording here? Am I visible now? No. In the Meet. Yes, Arjun, you are visible now. Got it. I share my screen. Just a sec. Is it visible? Yes, Arjun. Yes. Got it. So let's start on the topic internships. Like this is like one of the very hot and trending topic in colleges, especially in the pre-final year. So I'm here to talk about it. So like what all do you expect from an internship? If anyone can answer in the Meet. What are your goals, expectations from an internship? Like, You can utilize chat or at least you. Guys, we want the session to be interactive, not boring as usual. we are like this is not lecture, like college lecture. Like we just need to listen. We are The here to best interact. part is Arjun here is one of my very close friends, and that's why we bought him on the platform. So guys, as soon as possible, you can make it as interactive because वो हमारे age group का है. Okay. Okay, so is there any chat in the Meet? Yes, there is. You are a guest, so maybe it won't be visible for you. Yeah. Oh, no worries, no worries. So I'll continue. So like a basic internship is a place where you get to simulate what you are thinking of, like what career path you're thinking of. You tend to apply your skills in that particular internship to validate whether it's your interest or not. लाइक काफी जगह आप कोडिंग करते होगे, काफी आप वेब डेवलपमेंट डेटा एनालिस्ट स्क्रिप्ट पढ़ते होगे, बहुत सारे आपने कोर्सेज करे होंगे अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्किल सीखी होंगी. बट इंटर्नशिप में जब आप जाते हैं तो इट्स लाइक अ थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. दोनों में जो डिफरेंस होता है आपको एक इंटर्नशिप में कंपनी में काम करते वक्त समझ आता है. So it's all internship is all about getting the opportunity, having a mentor in the company. That mentor is going to teach you like what's correct, what's not correct, what are the things that are actually practically not feasible and are theoretically correct. And there are training. And like the best part I think about internships is that we tend to learn a lot of new skills in the company itself. That would be team management, communication, like how to communicate with a person who is 30 years older in front of you, and personal development. So moving on to the next, this was just a meme I found on the internet. This was like why internships.
So this was just a meme in which a boss is like telling their employees that he was reading a book about a leader, and he realized that he doesn't have any of those skills that was written in the book itself. So even like the boss was surprised. This was just a meme. So like first thing is, know yourself better. Like everyone has their advantages and disadvantages. They must be good at something and might be better at like bad at something else. So you need to figure it out. Like, what are your strengths and weaknesses? Apparently in India right now, like there's the surge in coding and like software IT job profiles. So every person is like blindly rushing towards those profiles, irrespective of whether it's his strength or not. So to like get sounded with your own abilities, you need to like try out different positions, like how the work there is, whether are you able to apply your mind or not, and various other aspects to know yourself. Like, am I feasible for this job or not? Like, if you are going to be feasible, if you're enjoying that particular work in the internship as well, you will be working in that particular role for next 30 years. And in that 30 years, you eventually want to grow and you don't want to stick at that particular position. So I feel like this is the main point which like drives my motivation to experience different roles as an intern at different positions, to know myself, like whether I'm a fit for this role or not, or whether I can spend my next 30 years at that particular role or not. Second is like, second point is like, be lazy. I'm saying that learn what's needed in the industry, not what not needed. Like there are tons of people who tend to learn various skills, but when they go to an interview, they tend to like realize the majority of the part that they had learned is not of their is not actually applicable in the or in the like company itself. That could be because the technology is like updating very much, updating very fast. So most of the skills which might be like useful today might not be even practically applicable after 4 to 5 years. And we have seen like very new careers which have been coming to the market right now. Along with that, so I'll say ki, be lazy, learn what's needed, and not everything that other person is like learning. Don't be in a sheep race, like herd race, like that whatever the other persons are learning, you are also just cramming it, irrespective of whether you want to do it or not. And third point, that most like one of the amazing like motivation of doing an internship is you earn a high stipend, and that high stipend you can like enjoy without compensating your needs. You don't need to think like, should I buy this or A product or B just because it's costly or not. Like these are some of the like advantages of an internships. So talking of domains and roles, like how many guys of you are actually aware of different roles apart from IT roles? If I could get like, if you could name some in the chat, like different roles that are present in the country. Even like आजकल तो startup का भी culture एकदम मीडिया में आ रखा है, और like हर company products build कर रही है अपने अपने. So like engineers from bottom, like from making the company to like making it a brand, are required at every particular segment. So like whosoever are present in the audience, like if you can tell in the chat, like आपको कौन कौन से roles के बारे में पता है? Guys, if chat is not available, you can unmute, please. HR. Okay, HR. Then let's keep it interactive session, like एक कॉलेज लेक्चर जैसे तो फिर बहुत बोरिंग हो जाएगा ये वाला सेशन. इट्स लाइक कि फटाफट से एक प्रोफेसर आए, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, चले जाए. So let's not keep it that, let's make it fruitful. There is marketing that's there. Okay. And like, have you heard of like data analytics? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Infrastructure engineer, like all those streams which are present on the screen. Is anything new which you find like that is like you have never heard of?
uh, so like the Infrastructure. got it, infrastructure engineering. So I'll like give a 2 to 3 lines description of each of the roles. So starting with the client servicing. So actually the point is like startup culture is coming in the India and it has established its roots in the India. So earlier हमारी जो country थी वो एक service based nation थी. That is यूएसए एंड यूरोप में सारे प्रोडक्ट्स बिल्ड होते थे और उनके लिए जो कस्टमर सपोर्ट होता था या उनके लिए जो हम सर्विसेज देते थे वो इंडिया प्रोवाइड करता था. बट अब जो नया रेवोल्यूशन इंडिया में आ रहा है उसमें स्टार्टअप्स बिल्ड हो रहे हैं. दैट इज हम प्रोडक्ट्स अपने बनाने स्टार्ट कर चुके हैं. तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट जब हम प्रोडक्ट्स अपने बना रहे हैं तो हमें इंजीनियर्स हर रोल पे चाहिए. दैट इज क्लाइंट सर्विसिंग. क्लाइंट सर्विसिंग इज लाइक at any point of time whenever you feel कि इस कंपनी में यार मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है. दैट कुड बी सेल्स. हमने Amazon में आपने पेमेंट कर दिया बट आपका ऑर्डर आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया बट वहाँ पे पेमेंट फेल हो गया. फ्रॉम दिस पॉइंट टू आपका ऑर्डर घर तक नहीं आया तो आप कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करके ऑर्डर की स्टेटस जान रहे हैं. ये पूरा जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली क्लाइंट सर्विसिंग के लिए आता है कि लाइक whether I'm able to fulfill the requirements, how am I gathering all these requirements, that is warehouses में काम करने वाले जितने भी segment आता है. Contract making is like on a manager role जहाँ पे different different contracts, deals and acquisitions होते हैं. आपने देखा होगा काफी सारे यूट्यूबर्स जो है वो नए नए ब्रांड्स के मोबाइल फोन्स अपने एडवर्टाइज करते हैं. So that is somewhat contract making. तो इसके लिए भी एक specific type of लोग होते हैं. और second would be patent analysis. This is mainly to use कि हम कौन सी जो टेक्नोलॉजी है वो कम पे करके यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट पे बनाने के लिए. फॉर द सेल्स प्री सेल्स दैट इज अगेन लाइक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कि हमें कैसे अपने इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि फ्लिपकार्ट जब भी नया दिवाली सेल्स निकालता है तो हु इज गोइंग टू बी द ब्रांड एम्बेसडर, व्हाट आर दे गोइंग टू हैव ऑन द स्पॉटलाइट. तो ये सारे जितने भी डिसीजंस होते हैं ये प्री सेल्स एंड सेल्स टीम देखती है. मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट दैट इज डिजाइनिंग. तो डिजाइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं. ऑलमोस्ट हर कंपनी को नीडेड होता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूआई यूएक्स. यूआई इज यूजर इंटरफेस, यूएक्स इज यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स. सो इसमें बेसिकली हर वेबसाइट का बनने से पहले क्या क्या लेआउट होगा, क्या क्या फीचर्स होंगे, कौन सा फीचर कहाँ पे, लाइक लेफ्ट साइड राइट साइड, उसका जो माइक्रो एनालिसिस होता है वो एक पूरा यूआई यूएक्स डिजाइनर करके देता है जिसपे हमारे पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डेवलप करते हैं. तो इन अ कंपनी सबसे पहले पूरी एक क्लाइंट सर्विसिंग टीम जो होती है वो हमारा पूरा एक लेआउट डिजाइन करती है. तो बेसिकली क्लाइंट सर्विसिंग एंड बिजनेस टीम, दैट इज अ मैनेजमेंट टीम दैट चेक्स कि हम क्या क्या इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, कैसे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. उसको जो हम आइडियाज होते हैं वो आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डिजाइनर्स से हाउ वुड दैट वेब पेज और हाउ वुड माई प्रोडक्ट लुक, उसका हम यूआई यूएक्स डिजाइन करवाते हैं, ग्राफिक्स डिजाइन कराते हैं. ग्राफिक डिजाइनर्स का और रोल यू कैन सी इन सोशल मीडिया इंटर्न्स. आपने काफी सारी जगह देखा होगा और इंटरनेट पे आता है हायरिंग सोशल मीडिया इंटर्न्स या मार्केटिंग इंटर्न्स. तो इसपे एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, इट इज बिकॉज हर एक स्टार्टअप का जो फेस होता है वो उनका सोशल मीडिया होता है. हर सोशल मीडिया ही उस स्टार्टअप को रिप्रेजेंट करता है, कनेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड से. दैट इज ईदर टू क्लाइंट्स या अननोन पीपल. तो इसका आपने बेस्ट एग्जांपल देखा होगा जोमेटो का इंस्टाग्राम पेज. इफ यू हैव विटनेस कि उसमें कैसे वो मीम्स को कनेक्ट करते हैं फूड के थ्रू जिससे वो अपना काफी अच्छा ऑडियंस को इंगेज कर पा रहे हैं. सो दिस इज अ वर्क ऑफ अ ग्राफिक डिजाइनर कि वो एक कैसे वो पोस्ट डिजाइन करे such that it appeals to its Zomato's audience. So this is an example of these two careers. Second, third is photography, filmmaking, animation. Like ये काफी important होता है कैसा हर प्रोडक्ट दिखेगा आपका, कैसा वो इंटरनेट पर शो होगा, किस किस टाइप से फोटोग्राफीज होंगे. This is all present in designing. Third part is quality assurance. Like it is one of the thing could be कि आपकी वेबसाइट, अगर मैं टेक के फॉर्म में बात करूँ तो इट कुड बी कि क्या हमारी जो वेबसाइट है वो सही से चल रही है, क्या उसमें बग्स हैं. तो बग्स जो होते हैं वो पूरी क्वालिटी एश्योरेंस टीम चेक करती है और वो डेवलपर्स को इन्फॉर्म करती है. फोर्थ इज प्रोग्रामिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो पूरा प्रोग्राम करते हैं. लाइक ऑल द डिसीजंस मेड बाय दीज थ्री टीम्स would be implemented by programming. That is the software people which are present in the company. Moving on to the next part, management. So we have product managers, project managers, scrum masters, account managers. So if I keep an emphasis on first two things, so a project manager is a person who allocates equal amount of work to an individual in a team. अगर मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ थोड़ा आसान भाषा में,
तो इट इज कि अगर ये टीम को हमने कुछ प्रोजेक्ट दिया है तो कितने टाइम में कौन सा पर्सन कंप्लीट करेगा और उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा, वो इसमें एक चेक रखते हैं कि सच दैट कोई पर्सन फ्री ना बैठा हो या कोई पर्सन एग्जॉस्टेड ना हो जाए ज्यादा काम करके। और प्रोडक्ट मैनेजर्स की बात करूँ तो इट इज मेनली कि कौन सा एक नया फीचर या क्या क्या हमारी जो कस्टमर सेगमेंट है उसको वो प्रॉब्लम एक फेस कर रहे हैं, जिसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो हमारी कंपनी के वो मेट्रिक्स या वो पर्टिकुलर टारगेट्स अचीव हो जाए। और मैं जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में खुद हूँ, तो अ बेस्ट लाइक रिलेटेबल प्रॉब्लम इज कि कुड बी एंगेजमेंट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऐप बनाया एंड उस पे लोग ज्यादा टाइम तक स्टिक नहीं कर रहे, तो अब मैं क्या क्या ऐसे नए फीचर्स उसमें इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट करके देख सकता हूँ कि लोग उसको स्टिक करने लगे। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि इंस्टाग्राम ने रिसेंटली आपने सबने देखा होगा स्टोरीज का बटन आया है जिसमें आप इंस्टेंट नोट्स डाल सकते हो अपने चैट्स में। तो वो जो एक फीचर है दैट इज टू लाइक इम्प्रूव इंटरैक्शन, क्योंकि आप लाइक अगर फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर अकाउंट से आप 500 लोगों से कनेक्टेड हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 500 से एक ही टाइम पे बात कर पाओ। तो टू इंगेज कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर पाओ, उनके ऐप पे टाइम स्पेंड ज्यादा कर पाओ, उन्हें वो नोट्स का फीचर निकाला है। तो वो जो नोट्स का फीचर निकाला होगा दैट इज ऑल अ थॉट प्रोसेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैनेजर इन अ कंपनी, followed by the next domains, that is infrastructure engineers. These are the engineers who take your company from 0 to 1. It's basically जितना भी आपका डेटा, आपका कंपनी का वेबसाइट का डेटा जो भी स्टोर होगा, वो कैसे एक ऑनलाइन सर्वर पे क्लाउड पे शिफ्ट किया जाए। लाइक एवरीवन वुड बी अवेयर कि लाइक गूगल हैज इट्स क्लाउड, Amazon has AWS, Microsoft has Azure। तो अगर हम इनके डीप में जाएं तो इसके अंदर बेसिकली हम कंपनीज क्या कर रही है कि दे हैव डेवलप्ड देयर ओन सर्वर्स। तो इफ अ स्टार्टअप हैज बिगन विद इट्स प्रोडक्ट, उसके पास इनिशियली इतना फंड्स नहीं होता कि वो अपने सर्वर्स खुद होस्ट कर पाए। तो इस फंड की कमी के कारण वो कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको हम प्रेजेंट नहीं कर पाते पूरे वर्ल्ड को कि वो क्या प्रोडक्ट सेंड करना चाह रहे हैं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम AWS Azure काफी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज है। एंड आई बिलीव कि AWS Azure एक्चुअली में फ्यूचर हो सकता है, बहुत अच्छा फ्यूचर है हमारे पूरे इंडिया का, जिसपे हम अपनी साइट्स काफी कम रेट पे उनको पोस्ट कर पाएंगे और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको हम डील कर पाएंगे। एंड लास्ट पार्ट ऑफ अ लाइक engineering side could be digital marketing. So digital marketing has a different strategies अपेरेंटली, लाइक जितनी भी हमारे पास काफी सारी मार्केटिंग और सेल्स की जो मार्केटिंग इंटर्न्स, स्ट्रैटेजी इंटर्न्स के नाम पे जितनी भी इंटर्न्स निकलती हैं लिंक्डइन पे स्पेसिफिकली, उसमें हम देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ वो जो होती है वो सेल्स पे फोकस होती है एंड सेल्स इज नॉट एक्चुअली मार्केटिंग। तो यहाँ से काफी लोग ड्रॉप ऑफ आता है कि लाइक यार इसमें नहीं जाना क्योंकि इसमें लोग ये सामान बेच कहेंगे कि सामान बेच के आओ तो टारगेट पूरा करो। सो दैट इज नॉट एग्जैक्टली मार्केटिंग, दैट इज सेल्स। बट वो काफी ज्यादा गलत नोशन में हमें प्रेजेंट किया जाता है लिंक्डइन और लाइक इंटरनेट की काफी सारी रिक्रूटिंग वेबसाइट्स पे। तो एसईओ इज मेनली फोकस्ड ऑन कि मैं अपनी वेबसाइट पे या अपने ऐप पे क्या क्या ऐसे ऐसे टर्म्स यूज करूं कि जब कोई बंदा अननोन पर्सन गूगल सर्च करे तो हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर शो हो टॉप सर्च रिजल्ट्स में। तो एसईओ की कीवर्ड्स होते हैं और उसपे एक अलग पूरा मार्केटिंग साइट आता है। और सिमिलर इज एसईएम एसएमएम, लाइक एसईएम इज सर्च इंजन मैनेजर, एसएमएम डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट इज लाइक आप इसका जो वर्क होता है दैट इज कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एडवर्टाइज करोगे, आप कितना टाइम एडवर्टाइज करना चाहते हो, लाइक पूरी जो डिजिटल स्ट्रैटेजी होती है कि आपको एड दिखे। और तो लाइक इंस्टाग्राम पे आपने काफी बार देखा होगा कि आपको टारगेटेड एड्स दिखते हैं, लाइक जो भी आपने फ्लिपकार्ट पे सर्च किया होता है एक बार, चाहे नॉर्मल ओवरव्यू लेने के लिए, उसके आप देखोगे कि आपको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे एड्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। गूगल एड्स आपको उसी टाइप के एड्स दिखाने लग जाता है कि यहाँ पे सेल चल रही है, आप यहाँ से ले सकते हो, वहां से ले सकते हो। सो दिस इज ऑल अ वर्क ऑफ डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट, जो अलग अलग सोर्सेज से डेटा उठाते हैं और फिर आपके क्या क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं आपको रीच आउट करने के लिए वहां पे एडवर्टाइज करते हैं, जिससे कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके सामान खरीदो। एंड मार्केटिंग इज समथिंग दैट इज कि आप एड्स बनाने में जितना इनोवेशन होता है, तो यू मस्ट बी साउंडेड विद लाइक वेल साउंडेड विद तन्मय भट्ट, जो मुंबई में एक काफी बड़े यूट्यूबर है। तो वो बेसिकली एक मार्केटिंग एंथुसियास्ट है और एंड स्क्रिप्ट राइटर है। तो यू विल सी कि उनके ब्लॉग्स में आप काफी ज्यादा देखोगे तो ही इज ऑन द सेट्स लाइक थिंकिंग ऑन कि व्हाट शुड बी द स्क्रिप्ट, what should be the theme of the ad that must appeal. So this is all about like some of the domains which we as an engineers can get into apart from coding. Like
coding is also a great aspect, but these are also some of the other great, I'll say, career aspects in which we must try at least we must कि at the end, like when we are into job, we don't feel कि यार ये कभी try out नहीं किया और बहुत ज़्यादा interesting लग रहा है. So this is like one of the thing. Then coming to the side income, like everyone in the college has like one basic need कि यार अपनी एक income हो जिससे घर वालों से ना लेना पड़े and अपने जितने भी खर्चे हैं हम अपने आप उठा लें. तो इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी हमारी हॉबी है, अगर हम जैसे मार्केट में जाके देखेंगे, इट इज कि जितनी भी हमारी हॉबी है वो एक्चुअली मोनेटाइजेबल है. जो हमारी हॉबी है, फॉर एग्जांपल इट कुड बी वीडियोग्राफी, प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट लोग फ्री में लाइक प्रोजेक्ट्स बनाते हैं अपने रिज्यूमे के लिए. तो आप देखोगे कि लाइक एक्चुअल में कंपनीज को लोग नीडेड होते हैं जो उनके लिए ये सब काम करके दे. इट कुड बी इवन कंटेंट राइटिंग. well like so this is a part of freelancing in which you can earn like a great amount of money for your college life. So you need not to like ask your parents ki, like you need to eat at canteen, so you need to get like ask money. You can buy whatever you want. So like some of the like main streams I have particularly experienced, or like I have seen my friends experiencing in freelancing, is subject matter expert. That is ki, for example, अगर आप लोग महाराष्ट्र से हो, you guys know Marathi very well. So there would be some people living in Maharashtra, some children living in Maharashtra at a remotest district who want to study but who doesn't know English or Hindi. उनको आती ही नहीं होगी हिंदी इंग्लिश, वो मराठी में पढ़ते होंगे. तो आप उनके लिए काफी साइट्स को ऐसी नीड होती है कि आप इंग्लिश के जो सॉल्यूशंस हैं उसको मराठी में कन्वर्ट करके आप वीडियो सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करो और उसका वो आपको पे करते हैं. तो दैट कुड बी, आप डाउट सॉल्व कर सकते हो. दैट इज दैट वेल नोन ब्रांड्स जो आपने लाइक अपने स्कूल टाइम्स में काफी ज्यादा सॉल्यूशन देखे होंगे. वो सारी जो वेबसाइट्स है वो आज के टाइम पे ओपन है कि कोई भी आए उनके पास आके सॉल्यूशन सॉल्व कर सकता है, उनको सॉल्यूशन दे सकता है, एंड दे पे वेरी वेल पर क्वेश्चन. Like I remember I was getting paid 25 rupees per question to solve just one question, give a proper solution in a PDF. So this is like a really great aspect in which you can try out your luck. अगर आप लोगों को like इसमें फील होता है कि यार subject matter expert is something which I like to do in my free time, you could definitely try for teaching. Like teaching would be a domain which you could try your hands in, and if you like, it has a great like progress as coming to the next topic, it is content writers. So like काफी सारे जो लोग होते हैं, they like copywriting, they like writing articles that we have been writing in school time itself. So those people can start copywriting. They could become a blogger itself. So what copywriting and blogger helps you is, it will help you find interns in startups. Basically एक जो नया startup होता है उनको अपनी वेबसाइट डिजाइन करवानी होती है. So apart from designers, उन्हें एग्जैक्ट क्या क्या वर्ड्स, क्या क्या एग्जैक्ट कीवर्ड्स रखे जिससे कि उनकी ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर पाए, इसकी नीडेड होती है. तो वो जो आप देखोगे कोई भी वेबसाइट पे आप जब जाओगे, एक लैंडिंग पेज देखोगे, तो उसमें जो वर्ड होगा वो काफी ज्यादा आपको कनेक्ट कर पा रहा होगा. तो इट इज बिकॉज किसी कॉपीराइटर ने वो सब वर्ड सोचे होंगे कि लाइक क्या वर्ड्स कौन से टाइप के लोगों के लिए ज्यादा अपीलिंग होंगे. तो आप देखोगे जो चिल्ड्रन के लिए ज्यादा वेबसाइट्स बनी होती है उसमें चाइल्डिश वर्ड ज्यादा यूज होते हैं, स्लैंग ज्यादा यूज होते हैं. जो हमारे लाइक पेरेंट्स लाइक एज के लिए जो लोगों के लिए वेबसाइट्स होती है उसमें एक डिसेंट इंग्लिश लिखी होती है जो ज्यादा कह सकते हैं स्लैंग्स इन्वॉल्व नहीं करती, प्रॉपर फॉर्मल इंग्लिश होती है. So this is the difference that copywriter has to like figure it out. Then you can go and become a blogger, or taking again example of startups कि काफी सारी जो कंपनीज होती हैं, और to establish their base in the market itself, they need to present their blogs कि like how is their model apt with respect to the market. अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इट इज कि उनका जो मॉडल है, वो जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, वो कैसे मार्केट को नीड है या किन किन लोगों को उस मार्केट की नीड होगी, उस प्रोडक्ट की नीड होगी. दैट इज ऑल अ वर्क ऑफ ब्लॉगर कि वो अच्छे से लाइक एक्सप्लेन करे, एक बहुत कॉन्साइज और प्रिसाइज वे में उसको एक्सप्लेन कर पाए कि लाइक क्या क्या एक स्टार्टअप सर्विसेज देने वाला है, ये नई कंपनी सर्विसेज देने वाली है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसको आसान तरीके से समझ पाए. अगर लाइक एक मैं ब्लॉग में बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स डाल दूं तो इट वुड बी लाइक काफी लोग को समझ ही नहीं आएगा, और जब काफी लोग समझ नहीं आ पाएगा तो इट वुड बी अ बैड थिंग फॉर स्टार्टअप कि लोग उनका प्रोडक्ट ही नहीं समझ पाए. And as a content writer, third part could be as a LinkedIn influencer. So like whatever you are studying, like even your course material, so there are people who would be interested in going in that particular course itself. That could be if you are a computer science engineer, if I'm like an electrical engineer, so there would be people who would be interested in going into core electrical. तो उसमें इलेक्ट्रिकल जाने के लिए these people are looking for new content.
तो काफी लोग LinkedIn पे आजकल influencership start हो चुकी है. That is, they provide short and crisp summary of what they have studied in their time. That is like a very relatable thing to different people of that particular segment. तो इससे आप देखोगे कि लाइक काफी लोग आपसे कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे. अगर लाइक दे फाउंड कि आपकी जो नॉलेज है वो एप्ट है, तो आपको काफी स्टार्टअप्स रिक्रूट करना स्टार्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा है. तो यू विल बी एबल टू वर्क अंडर देम, यू विल बी एबल टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स. Third point is like if you're a coder, if you have like tried web development, app development, you can surely take your projects. How to take those projects, I'll discuss it later in the PPT session. Fourth could be social media Hello, management. Arjun. Yeah. Will you please broaden your screen? Broaden your screen in sense. Like the will you please start the Arjun, यहाँ पे presentation share का properly? button है ना? Yeah. If it's visible there. This is Figma. No, prototype का sharing. In the right शेयर के side. बाजू में जो प्ले बटन है ना, that उसके one. बाजू में जो play button है, हाँ. ये वाला. Yeah. So these were like some of the domains. I guess like it is not in the loop, so some of the slides are missed. No worries, like I'll explain just one slide normally, and we'll continue with the like play button itself. So like there are 2 to 3 more categories that you could earn like high income, and this could, you can even take it as your career itself, क्योंकि इसमें काफी अच्छा careers है. And like I've seen my college seniors जो इसमें ही actually purely अपना career ले चुके हैं, and they're earning like a great amount in this. So so this is like one of the things, social media management. सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए काफी ज्यादा आजकल डिमांड है, क्योंकि एवरी स्टार्टअप वांट्स टू present themselves in a better way. So what needs to be in the session, what needs to be presented to the world is highly focused upon. Next could be event management. तो इवेंट मैनेजमेंट के काफी ज्यादा यूजेस आते हैं. जब आप काफी ज्यादा कोहॉर्ट्स जाते होंगे तो आपने कोहॉर्ट्स में देखा होगा काफी लोग होस्ट कर रहे हैं, काफी लोग पूरी कम्युनिटी को मैनेज कर रहे होते हैं. तो ये कम्युनिटी मैनेजर्स, इवेंट मैनेजर्स जो होस्ट होते हैं एक पर्टिकुलर इवेंट्स में, दैट इज अ इवेंट मैनेजर. इससे लाइक आप काफी अच्छी अपनी पर्सनल स्किल्स को, लाइक कम्युनिकेशन हो गया, ये कम्युनिकेशन हो जाएगा. सेकंड कुड बी लाइक इंटरपर्सनल स्किल्स. थर्ड वुड बी कॉन्टैक्ट्स. तो ये जो 3 स्किल्स है, इससे आप काफी ज्यादा ब्रश अप कर सकते हो, जो आपको किसी भी करियर में जो आप आगे चूज करोगे उसमें काफी सपोर्टिव होती है. Last is videography. Videography is like video animations, and I have personally seen like my friends who are into videography are really like earning very high, just because they have a pure interest in videography, and they're like totally making videos for their clients, and their clients is like they tell them the requirements, like they want these things to be highlighted in the video, and they make a pure video on that. So this is like these are some of the things in which you could get a side income. So like just to begin with some of the, like make it more interactive, let's start with a normal questions. Like how much do you think कि जो मैंने UI UX designer के बारे में बताया, with projects से on an average like earn कर पाते हो? Or answer in the chat, or like you can even speak it up. I think that it depends on project basis. Like for some projects, you might have a lot of work. I mean, like let's say for 1 or 2 like portfolio websites or some, if you had to make it for somebody else, it might be less. But yeah, I feel it should be like for large projects, it should be around more than 30K or something. Got it. 30K. Like anyone else, if you would like to answer it as well. I'm talking of a like normal startup जहाँ पे like आपको पूरी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए दी जाती है. Like answer was definitely correct कि different projects के base पे different price होता है. But if I talk of an average कि startup में आपको पूरी वेबसाइट या फिर नए फीचर्स पे डिजाइन करना है, तो how much could you get paid for? And this is per month. 25 to 50. Got it. Like so to get a rough estimate, there's some issue with this. So basically, like
this was like some of the data I found it on the internet. Like from any project, on an average, UX UI UX designer could earn 60 to 1 lakh easily, and this project could even last for either 1 month or 2 months. So that's like getting paid 30K to 50K per month to 1 lakh. So that depends on how better your experience is, how better projects you have in your portfolios. So moving on to the next question, like how much do you think an experienced product management intern can earn per month? Any guesses? 30K to 60K. Okay. What about the others? Any blind guesses, if any? Like I agree, like product management intern, like product management is something new which is like coming into the country. So we really have like a great openings and we have less people in it. So currently, like everyone is getting paid very well in this as a career, and even interns are able to like earn very well. So we move on to the results. Like the answer was like we are able to make 30 to 60K in a month, and just with like if I talk about myself, I'm able to like I have to devote just 3 to 4 hours in a day in my project, and we are getting paid very well. Like most of the interns are in this range. So moving to the next question, like the last question, like last survey, like how much do you think can an experienced business strategy intern can earn? Like experienced business strategy intern. Like this was one of the roles which I initially talked about. Any blind guesses? 60K plus. Got it. And anyone else? Guys, like any blind guesses, like business strategy intern for a startup or a company, whatever you want to answer. Okay. So like on an average, you'll be earning 60K plus to get this business strategy intern per month. Like this is a very easy amount. Like however, the work involved in it is very hectic. So this is kind of a tedious job you'll be working on, and like more than like I'll say again say more the experience, more is the stipend, more is the amount of money you can earn by these interns. So I'll talk of some myths that are related to internships. So first and the most important, like important myths, like most of the people I guess would be having is, do you guys feel you need to be a perfectionist to get an intern? Or yes or no? Yes. Okay. What about the others? Yes. Okay. So So I'll like brief it, summarize it as well. What I have like experienced it in my throughout like my internships was like almost 80% of the companies. I'm not talking about top tier companies which are present in the country. I'm talking about startups, like well-funded startups to like building startups. If I talk of those companies, 80% of of those startups doesn't require you to be a perfectionist. They just want you are curious. You're curious to understand like you're curious to learn new things. You're you, you're curious to learn new things, and you have basic skills. For example, if I talk of product management, product management is a career in which different companies are in different sectors, but you can see that people are switching their job roles. So what could be the possible reasons? So in this, it is key. We have a learning tendency. We had taught every skill from 0 to 1 in the company itself. What they want is they look for our basic skills, that is problem solving. So they gave us cases and see like how till what degree are we able to think on that particular problem. So based on that thinking level, they're able to judge ourselves whether we'll be a great fit for the company itself or not. So this is apart from product management. I have seen many business analyst skills and other skills as well, in which they just look for minimum skills. That is either like SQL. If I talk of business analyst, it could be SQL, or they don't even require Python.
they like mention, although they mention in the job requirements, but they're good to go if you're not okay with that. They just want you show interest that you are applying in the internships because you have an interest in it. Second, you want to learn from them. So in a startup, you will be having a great learning experience in it. Talking about some next internship, like most of the people I have met, like my friends, have have a preconsidered notion कि यार ये जो कंपनी है, ये जो रोल है, इसकी कंपनीज मेरे कॉलेज में नहीं आती है, तो मेरे को एक ऑन कैंपस इंटर्न नहीं मिल पाएगी या ऑन कैंपस मेरे को जॉब नहीं मिल पाएगी, तो क्या मेरे को स्टिल ये ट्राई आउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो I'll tell you a fact like about my college. So like 50% of the people who are like sitting on campus interns will eventually end up taking off campus offers because of two main reasons. First is off campus even interns as well as job offers are well paid. Second, this is something which is of our interest and this is not what college has given us to you. So there are tons and tons of opportunities off campus. You'll like even if you search on the internet of any skill or any role you are interested in, space internship, you'll see like there are multiple openings in multiple companies, and just the factor like you'll be differentiated based on the experience. You'll be differentiated based on your experience and the amount of paying you'll be paid as per your experience. Like you'll see ki, on a same project, a person is getting paid 25K, and on the same project you'll be getting paid 45K. So the difference is just because of the experience that the person has. So this is about the internship. So if you are even thinking कि यार ये particular company इस roles के लिए मैं college में नहीं खोलती है, so even though I am great fit in it, I won't be able to like go in this. I won't be able to make career in it. It's completely wrong. Like I'll say just go off campus, experience the roles yourself. If you feel कि यार हाँ अब नहीं आ रहा है, then I'll say कि you could continue whatever you want to think. That could be like your on-campus interns. But I'm like 90%, like 90 to 95% sure that you will definitely end up in a role if you really want to get into a particular role. Just a second, like there's someone in the door. Just a second. Guys, are you finding the event interesting? Sorry, really sorry. Apologies for the delay. What's I'll up? continue. And like one of the like most I also like have seen my friends in this. I've also seen my friends in this like preconceived notion कि यार ये opportunity बहुत अच्छी है, company बहुत अच्छी है, but ये कम pay कर रही है, तो should I accept it, reject it, या मैं कभी future में कोई अच्छा offer आएगा तब ले लूं? So what should be my decision in that? So I think कि if a company is paying you low, it means कि वो company आपसे बहुत कम expect कर रही है कि आपको कुछ आता होगा. They'll be training you very well. So if you feel कि यार I am a newbie in that part, if you feel that I am a newbie in that particular field, जहाँ पे मेरे को relevant experience नहीं है and I won't be able to perform as well, which is required as per the industry needs, what you can do is you can take up that low-paying intern, join that intern, learn skills from the seniors who are there present in that particular company. They'll train you. They won't be even like hesitating. Just be open with them. You don't know that particular skill. Please teach me. They'll be like giving you projects accordingly that would be teaching you that particular skills. The best example of this could be in one of my companies I was working in this summers. That was Mojoto. I was not having a proper documentation of how do we need to do a competitor analysis. तो उस कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए मैंने अपने जो मैनेजर रिपोर्टिंग मैनेजर थे मैंने उनको क्लियरली बता दिया कि सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि मेरे को इस पर्टिकुलर डोमेन में कैसी कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है या मेरे को क्या क्या एट्रीब्यूट्स पे कंपनीज को कंपेयर करना है. So what they did was they gave me a project, like they shifted my project to another project, जहाँ पे eventually I had to research on what are the things by which I can compare their company with the others and like what are the features that I could differentiate their company with others. तो इससे मेरे को उस का क्या बेनिफिट्स हुए कि आई गॉट टू लर्न कंप्यूटर एनालिसिस जो मैं अपनी करंट इंटर्न में without asking the favor of the same I could directly implement and deliver it to the company. Second, I got to learn new things, new aspects. That was data in that previous company. So you'll see कि startups में आपको learn सीखने को बहुत कुछ मिलेगा
just that you should have a learning tendency और आपको open रहना है कि यार मेरे को ये नहीं आता है तो मेरे को ये सीखना है. So they'll be like definitely paying you low, but they'll be teaching you all that required skills. So in turn, it could be like आपको वो कंपनी सिखा भी रही है और आपको पैसा भी अलग से स्टाइपेंड भी दे रही है. So what these companies do is कि आपसे like 3 months के लिए अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो it is कि आपको 1 महीने वो पढ़ाती है पूरा, लाइक आपको पूरे सिस्टम्स के बारे में इंट्रोडक्शन देती है. सेकंड थर्ड महीने में वो आपको उस प्रोजेक्ट पे काम करवाती है. So what you have is a stipend. The second part is you have an experience, and third you get to know कि यार क्या मैं इस पर्टिकुलर रोल के लिए बनाऊं कि नहीं बनाऊं. फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कोडिंग रोल के लिए एग्जाम्पल मैं एंटर कर जाऊं एंड आई फाइंड कि यार ऑल्दो मैं कोडिंग कर रहा था जस्ट बिकॉज एवरीवन वाज डूइंग, बट दिस इज समथिंग व्हिच आई डोंट रियली वांट टू डू. तो यहाँ पे मैं अपने आप को फिगर इट आउट करूंगा कि यार जस्ट बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग इंटरेस्ट इन माय इंटर्नशिप, this career path is not really made for me. I should try out some other things. So this is like one of the things that internships helps us get about is कि मेरे को अपने strengths and weaknesses के बारे में पता चलता है कि मेरे को इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या क्या मैं इसमें naturally good हूँ कि नहीं. तो if I talk about myself कि मैंने फर्स्ट टाइम में काफी different चीजें इवन मार्केटिंग की इंटर्न्स ट्राई आउट की थी and I got to figure it out कि यार I am good at ideas but I really don't want to do coding. And majority of my college, I found like my college mates were doing coding just because others were doing. So they even didn't had a particular direction. So while I was able to like do internships at multiple companies, I figured it out कि जो company जब मैंने क्या मेरी जो एडवांटेजेस थे, क्या मेरी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस थी, वो मेरे जो रिपोर्टिंग मैनेजर्स थे वो मेरे को हर वीक के एंड में एक ब्रीफिंग होती थी, उसमें बताते थे कि यू आर एबल टू परफॉर्म दिस, आपको ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए. तो इस चीज से मेरे को अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का एक्चुअली में प्रैक्टिकल पता चल पाया कि लाइक शुड आई गो फॉर दिस करियर और नॉट. तो आई से कि इफ यू आर एंटरिंग अ न्यू करियर, go for low paying interns as of now, get trained by that particular company, have experience with that particular domain, and then go for a bigger branch. And they'll be like in a company, a experienced candidate is always preferred over skills. So moving on to like the main topic, like how to get an intern. Moving on to the topic, how to get an intern. So you'll be knowing most of these companies' name in which you can ideally find your intern. That is first LinkedIn, second is AngelList, third is Internshala, fourth is Hirect, fifth is Qubit. If I rank these companies in terms of percentage chances of getting an intern, I'll say LinkedIn is the best thing to get an intern if you have properly developed your profile. Second best would be AngelList. If you want to go into startups directly, you could directly talk to startup founders. So you could go into Hirect. Fourth is Internshala. There was a notion like a rise in Internshala interns in the middle, but I have been listening about like various scams, like the people are like training people, extracting work, but are not paying. So Internshala has been on a dip these days. There's a platform, Qubit, which is best known for software like interns. So moving on to the next, the most important thing that I feel is like how to convert an intern on LinkedIn. So what like first of all, like we need to develop a very well profile on our LinkedIn that should tell us who we are, what we are going to do, and we should have our own summary like who we are, how we identify myself in the world, how I identify myself, what are my skills. That should be clearly mentioned in my resume, followed by different experiences. So like all the experience that you guys would be getting in the college, from event management, from fests to working in an intern is counted for a company. A company would look at all of these factors to consider your application, especially the big companies. So ideally, when you click on jobs on LinkedIn, you'll be seeing a normal page like this. For example, if I see this page, it is mainly based on as a product manager. So what majority of the people would be doing is they'll be just click on the applying button. They'll just apply via LinkedIn and they would wait for a positive reply. But you know, like this is actually a method which is a very blind method. Like either you would get reply or you won't get reply based on how these other 23 applicants are. So a best method which I have personally figured it out is what you can do is
if you see any particular opening on in a particular company, connect to the hiring person. So what you need to do is go on the person's profile, that is Samiksha Tentori in this case. So I have like taken screenshots of particular person. So if I'm on the recruiting manager's profile, what I need to do is connect, click on the connect button. Now, before connecting a person, you should always add a note. Like this is one of the things which differentiates your request from a mass junk who are also sending requests. So what you need to do is you need to connect, add a note on this, add a note on this, like, and you need to tell the person why do you want to connect. Is it you want to just connect just for the sake of connecting on the LinkedIn, or is it like you have a you have some motivation, or you want to find a particular job in that particular company, so you are so you are asking for that particular reference. So sorry. So coming to the like basics of LinkedIn, so who should be ideally present on your LinkedIn? So I have seen like most of the people on the LinkedIn have their friends, like college, all the college friends would be connected with each other and they would be liking all similar posts. But we need to realize that social media is not, LinkedIn is not a social media. We should, so LinkedIn is some place where LinkedIn is a place you will be establishing your career. So ideally, who you should connect on LinkedIn is first your college alumni, all the college alumni who are at a great places or whom you want to be like should be on the LinkedIn. Second should be startup founders. That could be you'll be either founding like if you for example I want to find who's the founder of a particular company, just enter on Google, search that particular name, directly connected with the startup founder on the LinkedIn itself. Hold on a second. So basically, what we do is कि rather than just applying in that particular intern, हम लोग उस particular hiring manager से एक personal connect बना रहे होते हैं. हम उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं कि आई रियली वांट दिस इंटर्न जस्ट बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड टू गेट दैट इंटर्न एंड जस्ट नॉट कि मैं आई वांट एन इंटर्न जस्ट फॉर द हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑन माय सीवी. So based on your communication, based on this 300 word notes, you will be able to differentiate yourself with the masses that have been sending to them. You need to realize कि अगर ये hiring manager है, तो if there are like 23 applicants have applied in it, there would be at least 1,000 of the people who have viewed this opening. And out of those 1,000 openings, now it's the work of like hiring manager to differentiate like who would be a product, like who would be the actually fit for that particular job. So just seeing that particular resume and like calling for the just seeing that particular resume and calling for the interview is a bit lengthy process. So what nowadays candidates do is connect with the hiring manager, talk to that hiring manager what they're looking for. They candidates tell कि यार I am interested, I have these skills, I feel कि I am perfect fit for this job, so I should be like recruited for that particular opening. तो इससे क्या होता है, आपको हायरिंग मैनेजर को एक पहले से आपने एक पर्सनल कनेक्ट बनाया, तो एक हायरिंग मैनेजर के उसमें एक बायस क्रिएट हो जाता है कि यस दिस इज द पर्सन जिसने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए रादर देन कुछ XYZ कैंडिडेट्स जिन्होंने सिर्फ अप्लाई किया, इस पर्सन ने एक एक्स्ट्रा स्टेप लिया, मेरे से आके कनेक्ट किया, मेरे से आके बात की. So this leaves a very positive impact on the hiring manager, and your chances of getting recruited is very high, like very high. Personally talking about myself, cold mails haven't worked for me like even once. Like I had cold mail like 100 plus companies, and like none of the companies had replied to that cold mail. When I started doing this practice on the LinkedIn, I eventually started getting like replies. Like after 9 out of 10 companies were replying to my like application. So this was the chain I saw between a cold mailing and connecting on LinkedIn. So again, like when you start pitching yourself to the company, you need to think like I am the product. What are those things, like what are my qualities that that person is looking for, and that should be especially mentioned in this 300 words. For example, if I'm product manager intern, I'll be looking if I'm making like my career product management में बनाना चाहता हूँ, so I'll search for कि what are the top skills that product managers should have. So based on those top product management skills,
while I'm introducing myself to an unknown person, I look कि यार जब भी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं तो मैं अपने बारे में बताऊं 3 to 4 लाइन्स. मैं फोर्थ लाइन में एटलीस्ट अपनी वो स्किल्स बताऊं जो उस रोल्स के लिए एकदम परफेक्ट है. तो उससे मेरे हायरिंग के चांसेस काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं. देन इट शुड बी कि लाइक जब आप कनेक्ट करो तो इट शुड नॉट बी कि लाइक आपके कनेक्ट करते ही आपने इमीडिएटली हमसे कहने लग जाओ कि आई वांट दैट पर्टिकुलर जॉब. इससे लाइक आप काफी ज्यादा डिस्परेट साउंड करते हो एंड द चांसेस इज कि लाइक वो पर्सन आपको लाइक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो आपकी एप्लीकेशन को लेस पे करना स्टार्ट कर देगा. तो इट शुड बी बिकॉज कि that person would be having an notion कि पर्सन से मेरे से काम निकलवाने आया है, इसके अलावा इसको मेरे से कोई पर्सनल कनेक्ट नहीं बनाना है. तो इस नोशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो. जैसे अगर आप मैं एक हायरिंग मैनेजर से बात कर रहा हूँ तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो रिलेटेड टू हायरिंग कि आपकी कंपनी कैसी है, उसके अंदर वर्क कल्चर कैसा है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जिससे आप उससे पर्सनलाइज हो सकते हो. फिर आप सेकंड, अगर आप किसी टेक्निकल पर्सन से कनेक्ट करते हो लिंक्डइन पे तो आप उनसे उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एक डेटा एनालिस्ट बनना है एंड आई एम कनेक्टिंग टू अ डेटा एनालिस्ट और सपोज गूगल, so what I'll be doing is I'll be connecting first with Google. After connecting, after he accepts my connection request, I'll be asking about his personal life, like what are the skills he requires in his daily life, what are the things which he's looking up to in the daily life, what are the new things that Google is looking into, and what are the things he thinks an ideal candidate should have for his particular position. तो यहाँ से वो सामने वाला पर्सन को फील होता है कि दिस पर्सन इज एक्चुअली क्यूरियस टू नो अबाउट दिस जॉब एंड ही इज नॉट जस्ट अप्लाइंग फॉर द सेक ऑफ अप्लाइंग. तो यहाँ से आपको रेफरल मिलने के जो चांसेस होते हैं वो काफी हाई हो जाते हैं. प्लस आपने एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा एफर्ट लेके एक एक्स्ट्रा स्टेप लेके आपने अप्लाई किया है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग इंटरव्यू इज रियली वेरी हाई एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस. So the same thing that I just explained right now was don't assume, just ask. कि like जनरली एक जेडी में जॉब डिस्क्रिप्शन जब भी आपको एक इंटर्न का आएगा उसमें आपको सपोज 20 स्किल्स में रिक्वायर्ड होती है, बट यू विल सी कि जो पर्सन उसमें हायर हो रहा होगा उसके पास एट मैक्स 10 स्किल्स होंगी या 12 स्किल्स होंगी. सो कंपनीज डोंट एग्जैक्टली लुक फॉर कि आप 20 to 20 जो जॉब स्किल्स हैं उसको मैच कर रहे हो. तो इससे बेस्ट स्किल्स के आप उनसे मैच कर पाओ कि आउट ऑफ दिस 20 स्किल्स यू नो कि कुछ स्किल्स होंगी जो एसेंशियली चाहिए ही चाहिए होंगी, as other skills are like cream on the cake, which is like कि अगर it is better to have, अगर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी सिखा के आपको अपने आप ट्रेन कर लेंगे. तो like to get those grasp of those core 20 those core skills, what you need to ideally have is you need to connect with a person. जैसे आप डेटा एनालिस्ट अप्लाई कर रहे हो एक पर्टिकुलर कंपनी में, तो आप ऑलरेडी उस कंपनी के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं जो उसी पोजीशन पे है, आप उनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट करो. उनसे कनेक्ट करने के बाद आप उनसे बात करो कि लाइक व्हाट आर द स्किल्स दे आर इम्प्लीमेंटिंग इन द डेली लाइफ, एंड आस्क डायरेक्टली कि आपको क्या लगता है कि लाइक इफ आई एम सिटिंग इन द लाइक ओपनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, व्हाट आर द स्किल्स आई शुड लुक इनटू. So you will be getting a list of those four skills that particular company is looking for. And even in your interview, if you are able to highlight to the hiring manager, yeah, I have a strong amount on these skills and I'm a bit flashy on the other creamy skills, they won't be having any objection, believe me. And the next part is don't get the certificate but skills. Like I've seen like most of the people on the LinkedIn are like blindly like telling like they have been publishing it, I have this certificates, even like people are publishing the certificates of participation. So you need to understand कि LinkedIn एक ऐसी चीज है जहां पे आप अपने आप को बेस्ट शो करना चाहते हो, you need not to show कि आप एवरेज हो. सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज कि आपने जस्ट एक इवेंट अटेंड भी कर लिया तब भी आपको मिल जाएगा. तो आपको वहां पे एसेंशियली से वो सर्टिफिकेट डालने हैं जिसमें आपने या तो वो इवेंट जीता हो या फाइनलिस्ट हो या आपके लिए एक बहुत बड़ी बात हो. इट्स नॉट लाइक कि आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेटिंग या आपसे एक मीट में थे, आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिल गया तो आप उसको वैल्यू किया जाएगा. सो एट द एंड, बिकॉज अगर आपने सर्टिफिकेट शो करके हायरिंग मैनेजर से आपने अपनी एप्लीकेशन पास करवा ली, तो इंटरव्यूइंग में जब आपकी वो स्किल्स चेक करेंगे तो यू विल सी कि यार मेरे पास सर्टिफिकेट्स बहुत सारे थे, आई हैव 20 सर्टिफिकेट्स, बट मेरे पास उतनी स्किल्स नहीं थी जस्ट बिकॉज कि आई वाज कलेक्टिंग सर्टिफिकेट्स. सो पीपल टेंड टू डू 20 कोर्सेज एट अ पर्टिकुलर टाइम जस्ट टू गेट कि मेरे को इस 20 में से अगर 10 भी मैंने कंप्लीट कर लिए समहाउ चीटिंग करके इंटरनेट पे सॉल्यूशंस देख के,
so I'll be having certificates, so I'll be eligible to apply in that particular company. But that is really not the skills. Skills develop करने के लिए you need not to invest. आज के टाइम पर हर कोर्स आप देखोगे तो आपको प्रॉपर गाइड से लेके एक आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगी कि आपको कौन से सोर्सेज पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या क्या वीडियोस देखनी चाहिए, एंड दैट टू फॉर फ्री. So like there's no compensation. You need to spend money to get a particular skill. So I'll just summarize this slide as directly ask the person whom you want to be, what position you want to be. Don't gather certificates, but skills. Even if you don't have a certificate and you are able to prove yourself with your skill, you will be hired for sure. So some of the takeaways, like काफी interns ऐसे 6 months interns काफी companies hire कर लेती हैं, उसमें like operations जैसे boring काम करवाना स्टार्ट कर देती हैं. तो वहां पे आप देखते हो कि यार आपको कोई काम, आप काम तो कर रहे हो बट आपको कोई मजा नहीं आ रहा या आपको कुछ चैलेंज नहीं मिल रहा है. तो व्हाट शुड बी अ चेकलिस्ट ऑफ योर इंटर्न कि लाइक एक इंटर्न में आपने ज्वाइन किया, दैट इज अ न्यू एनवायरनमेंट. एक लर्निंग फेज होता है जहां पे आप लर्न करते हो और चीजें अप्लाई करते हो, जहां पे आप काफी सारे चैलेंजेस मीट करते हो. उसके बाद जब आपका सारा काम खत्म हो जाता है तो आप अपने बस उस ड्यूरेशन के कंपनी में हो रहते हो. तो बिलीव मी, you'll see say कि यार फ्री का पैसा मिलेगा एंड ऑल दिस नोशंस, बट वो एक्चुअली बहुत बोरिंग हो जाता है काम करना. एंड you'll feel कि यार अब मेरे पास ये स्किल तो आ गई है, मैं दूसरी कंपनी को ज्वाइन करके अपनी उस स्किल्स को वहां पे और ब्रश अप करता हूँ rather than wasting my time in that particular company. So I'll say have yeah, any doubts? Okay. So I'll say कि have these 3 checks in your interns. Ki make sure you are learning everything. Make sure you're learning everything new at your workplace. You are acquiring new skills. Second is, though I'll say this is the most important thing in an internship is connect with everyone in the company and make contacts. Just don't be restricted. In the sense कि जब आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर टीम अलॉट होगी. तो इट इज अप टू योर कि आपकी जो नीड होगी वो आपकी पर्टिकुलर टीम में ही कंप्लीट हो जाएंगी. आप चाहो तो उस पर टीम में इंटरेक्ट कर सकते हो, या आप चाहो तो डिफरेंट टीम्स के एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट लोगों से बात करके अपने कनेक्शंस बना सकते हो. तो वो कनेक्शंस जो होते हैं वो काफी आगे जाके हेल्प आउट करते हैं, either to get you into new roles, either to get you recommended into new position, or even if you want to join back that company in a different role, they'll be the person who will be backing you up. Ki I know this person who's really interested to work with me. Please hire him up. So I'll say ki always make new contacts. See or like listen to what other people have. Like what are the experiences of other people apart from your team. And fourth is exit when it starts to become boring. जब आपको लगे कि यार सेम रिपीटेड प्रोसेस मेरे को अब रोज अप्लाई करना है, मेरे पास कुछ नया चैलेंज नहीं आएगा, ऐसे उसी टाइम पे आप लीव कर दो. टॉक टू योर हायरिंग मैनेजर कि आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, आई हैव सैचुरेशन आउट ऑफ द सेंटर एंड आई कांट कंटिन्यू एनी मोर. So and like it won't be creating a bad impression but a good one. कि यार hiring manager knows कि यार इस person को कुछ नया challenge नहीं मिल रहा है. So you will have either 2 options. Either the manager would be like, you had a very good work, thank you for working with us. So that is the point जहाँ पे आप कह सकते हो कि if he knows some other opening at a different companies, he will be referring you out over there, or he will be changing your teams to a newer team that would be involving challenge. For example, if I take an example of my Pine Labs, so I was recruited for risk and divisions in which we were like हम मास्टर कार्ड का एक आसान भाषा में बोलता हूँ, तो उसमें हम मास्टर कार्ड का एक इंटरफेस बना रहे थे पूरा. तो वो हमने जैसे ही बना दिया तो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था वहां पे. तो आई टॉक टू माय मैनेजर कि आई डोंट हैव एनी चैलेंजेस लेफ्ट इन दिस कंपनी. तो उन्होंने मेरे को अब एक नया प्रोजेक्ट पे शिफ्ट किया है जहाँ पे मेरे को फिर से एक नया चैलेंज है. उस चैलेंज में मेरे को फिर से 0 लेवल से पूरा सीखना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. सो talk to your hiring managers, make sure you communicate with your seniors who are present in the internship. Don't be like कि अगर मेरे को एक इंटर्न में प्रोजेक्ट मेरे को इस पर्टिकुलर डेट को कंप्लीट करना है तो मैं उस पर्टिकुलर डेट को ही अपने मैनेजर को रिपोर्ट करूँ. You should properly communicate with your seniors. जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही होती है आपको ओपनली कम्युनिकेट करना होता है. एंड एट द एंड you need to know कि यार इंटर्नशिप आपकी कोई जॉब नहीं है जहाँ पे आपको बेस्ट परफॉर्म करना है. आपको वहां से सीखना है, बेस्ट सीखना है और उसको बेस्ट इंप्लीमेंट करना है. So that's why you should communicate each and everything with your immediate seniors. So you get to learn a lot of things. You get to learn a lot of shortcuts. कि हम एक लेंथी मेथड जो सीख रहे होते हैं वो एक्चुअली पता चलता है एप्लीकेबल ही नहीं है. उसका कोई एक फंक्शन होता है
जिसको हम एक लाइन में यूज करके पूरे उस एक पेज के कोड को हम पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं. So these are some of the takeaways. So like I'm a product manager. So telling about myself, like my domain. So this is a new domain, and I believe like very less people would be knowing about it right now. And the best part of it right now is कि इस product management में जैसे जैसे हमारी कंट्री में स्टार्टअप कल्चर राइज करता जा रहा है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर्स की नीड होती जा रही है. तो व्हाट एक्चुअली प्रोडक्ट मैनेजर डू इज दे सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट अ कंपनी फेसेस. ये जो प्रॉब्लम्स हो सकती है वो काफी सारी वेरियस टाइप्स की हो सकती है. अगर मैं बहुत बेसिक सी बात करूं तो इट कुड बी कि मेरे ऐप पे इंस्टॉल्स नहीं आ रहे, या इट कुड बी कि मेरे ऐप पे इंस्टॉल्स आ रहे हैं बट लोग उसको एक दिन के अंदर अनइंस्टॉल कर दे रहे हैं. तो वहां पे एक प्रोडक्ट मैनेजर का काम होगा सोचना कि ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं उस ऐप पे जिसकी वजह से लोगों को डिससेटिस्फैक्शन आ रहा है और वो अनइंस्टॉल कर दे रहे हैं. और फिर वो एक नया फीचर, उसके क्या क्या ऑल्टरनेट फीचर्स हो सकते हैं, या क्या एग्जिस्टिंग फीचर या एग्जिस्टिंग जो हमारा ऐप है उसमें क्या हटाया जा सकता है जिससे कि हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर पाए. तो ये काम होता है प्रोडक्ट मैनेजर का. एंड यू कैन से कि ही इज अ मिनी सीईओ ऑफ अ कंपनी. एक पूरे प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस होने हैं, क्या क्या चेंजेस होने हैं, क्या आइडिएशन से लेके रोल आउट करने तक पूरा काम एक प्रोडक्ट मैनेजर का रहता है, काफी एसेंशियल रहता है. तो लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई जस्ट सेड वाज कि इसमें लोग काफी कम है तो इसमें पे आउट्स काफी अच्छे जाते हैं. So like 5 mantras, like 5 skills I'll say ki as a PMS. Best thing in a PMS, you need to know nothing about a particular company to get in that company. For example, if you want to join a fintech company, in a coding, like if I talk about an IT profile, you must be very well founded with like you must be very well in contact with CP, competitive programming. You should have web development projects. So it's basically जो आपने already learn कर रखा है उसी का ही आप एक कुछ different version apply करने वाले हो. तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको कंपनी की एक नया सेक्टर मिलता है, उस नए सेक्टर के बारे में आपको पूरे जीरो से लाइक बेसिक्स से सीखना होता है. क्या क्या बेसिक्स होते हैं जल्दी से आपको सीखना होता है. फिर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी जाती हैं. उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में आपको अलग अलग सॉल्यूशंस, लाइक क्रिएटिव सॉल्यूशन सोचने होते हैं. लाइक कोई भी एक हमारे इसमें पर्टिकुलर फ्रेमवर्क नहीं होता कि ये आप फ्रेमवर्क लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, नहीं. इट्स लाइक ओपन थिंक थॉट प्रोसेस कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो ऐसे कि जो 5 मेन पॉइंट्स होते हैं एक प्रोडक्ट मैनेजर्स के इन अ कंपनी इज प्रायोरिटाइजेशन. दिस इज अ स्किल. इट इज कि आपके पास 10 प्रॉब्लम्स है, तो आप सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जिससे कि आप सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओ. तो देयर इज अ Pareto's principle that says कि work on a feature that involves 20% of work and has 80% of effect. So it's like आपको मिनिमम काम करना है, as I said earlier, आपको लेजी रहना है, आपको काम बहुत कम करना है, बट आपको इंश्योर करना है कि आपका आउटपुट जो है वो बहुत अच्छा है. तो हर कंपनी जो होती है वो बेसिकली आपको पता होगा एक मैट्रिक्स पे काम करती है. वो अपने प्रोग्रेस को मैट्रिक्स के थ्रू ट्रैक करती है. तो आपको ये चेक करना होता है सबसे पहले कि कौन सा मैं ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाऊं कि जिसको मैं सॉल्व अगर मैं कर दूं तो आई हैव मैक्सिमम इफेक्ट ऑन द मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल आज अगर इफ देयर इज अ चर्न रेट फॉर एग्जांपल, दैट इज कि आज अगर मेरे को डे 0 पे मेरे को अगर 100 लोगों ने सपोज इंस्टॉल किया मेरे ऐप, तो आई से कि डे 1 में अगर मेरा 50 लोगों ने मेरे ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया, तो चर्न रेट कहते हैं हम 50% है इसका. तो अब आई नीड टू थिंक ऑफ वेरियस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. आई नीड टू प्रायोरिटाइज ऑल द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि मैं कौन सी अगर मैं सबसे पहले सॉल्व कर दूं तो ये मैं 50% को मिनिमाइज करके जितना मिनिमाइज कर पाऊं उतना हो सकता है. तो अब क्योंकि आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होंगी, तो यू नीड टू लाइक हैव अ स्पीड कि आपको कौन सा अच्छे से सॉल्व करना हो. तो अब यू से कि फॉर एग्जांपल यू हैव आउट ऑफ 10 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपके पास 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई. अब आपको उस 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट के आपको सॉल्यूशन सोचने होंगे. तो अब आपको इसमें होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि पीएम में कोई भी एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होता कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही सॉल्यूशन है. इट कुड बी कि 10 सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, बट क्या डिफरेंस कहाँ पे आएगा, हर एक की इम्पैक्ट पे. हर प्रॉब्लम एक अलग लेवल पे या अलग परसेंट तक उस मेट्रिक को ड्राइव कर पाएगी. तो आपको इसमें स्पीड होनी चाहिए कि आप आइडियाज जल्दी जल्दी सोच पाओ, प्रॉब्लम्स को जल्दी जल्दी प्रायोरिटाइज कर पाओ, सॉल्यूशन जल्दी जल्दी सोच पाओ, और सॉल्यूशन जल्दी जल्दी सोचने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ फटाफट से, क्योंकि आपका कंपनी में ड्यूरेशन काफी लिमिटेड रहता है. तो आप जितना जल्दी इम्प्लीमेंट कर पाओगे आप उतने अच्छे से मेट्रिक्स को इम्प्रूव कर पाओगे. तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स. कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द थिंग्स, क्योंकि
प्रोडक्ट मैनेजर को आइडिएशन से लेके शिप करवाना होता है, तो एक प्रोडक्ट मैनेजर को बेसिकली अपना आइडियाज को पहले स्केल डाउन करना होता है, एक डॉक्यूमेंट पे लिखना होता है, दैट इज पीआरडी। उसको फिर वो डिजाइनिंग टीम के साथ बैठ के पूरा एक्सप्लेन करना होता है कि लाइक कैसा दिखना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर। यूआई यूएक्स डिजाइनर्स उसको फिगर आउट करते हैं कि कहाँ पे विच वुड बी द आइडियल पोजीशन। दैट वुड बी इनिशियली आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, तो जो बॉटम में सेंटर पॉइंट होता था दैट वाज टू क्रिएट रील्स, बट आज के टाइम पे आप देखोगे तो वहाँ पे स्टोरीज आने स्टार्ट हो गया, बिकॉज दे हैव थॉट इट कुड बी लाइक वन ऑफ द हाइपोथेसिस फॉर दिस इज कि इंस्टाग्राम पे लोग इनिशियली कम टाइम स्पेंड कर रहे थे और वो अपना कंटेंट ही कंटेंट बनाए जा रहे थे। हाउएवर जो लोग देखने के लिए थे रील्स वो बहुत कम, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जहां पे सबसे ज्यादा लोग टैप करते थे वहां पे उन्हें प्लस बटन की जगह उन्हें इंस्टाग्राम रील का बटन डाल दिया, जिससे कि अगर नेचुरली अगर बंदा पर्सन प्रेस करे तो वो रील्स देखना स्टार्ट करे, ना कि क्रिएट करना स्टार्ट करे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ अ प्रोडक्ट मैनेजर वर्क्स। So you need to have a great communication skills. Your great communication skills as in it's okay like if you are able to communicate. The basic thing is fluency is not taken into account in this thing. Communication as in whatever I'm thinking, I'm able to communicate it in front of the team and discussing it with. तो आप कोई भी आइडिया जैसे सोचोगे तो वो आप अपनी पूरी प्रोडक्ट टीम के साथ डिस्कस करोगे, तो आपके साथ वहाँ पे काफी ज्यादा डिबेटिंग होती है। कुछ काफी लोग आपको एज केसेस बताएंगे, एज केसेस एज इन कि ये वो एरियाज हैं जहाँ पे आपके जो फीचर है वो फेल हो जाएगा। तो यू नीड टू थिंक ऑफ कि लाइक ये फीचर जो है मेरे इसमें क्या चेंज कर दूं जिससे कि ये वाला पॉइंट पे आउट हम कवर अप कर लें। तो ये कम्युनिकेशन प्रोडक्ट टीम से लेके यूआई यूएक्स डिजाइनर से लेके आपको सॉफ्टवेयर टीम जो होती है, डेवलपमेंट टीम होती है, उनके साथ आपको बैठ के पूरा आपको बताना होता है कि आपको कहाँ से क्या कनेक्शन चाहिए जिससे कि आपका प्रोडक्ट कैसा दिखे। So I'll say कि one of the most important and hectic, I'll say partially hectic job is of a PM, जिसका एक पूरा प्रोडक्ट को आइडिएट करने से लेके स्केल अप करने तक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इनकेस अगर आपका प्रोडक्ट फेल होता है, अगर आपका फीचर सपोज नहीं डिलीवर कर पाता है क्वांटिटी, तो प्रोडक्ट मैनेजर को ही रिस्पॉन्सिबल किया जाता है। कभी भी कोई भी अदर टीम्स जो होती हैं, माइनर टीम्स होती है, उनको कभी भी आप देखोगे रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाता। Adaptability is just what I talk of कि आप एक नया सेक्टर ज्वाइन करोगे तो आपको फटाफट से उस सेक्टर के बेसिक्स, उसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनके बारे में सीखना पड़ेगा। और इसमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होता कि आपको बेसिक्स आते हो ना आते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो आई वॉज लिटरली जीरो एंड फाइनेंस, लाइक जीरो एंड पेमेंट्स, मेरी कोई नॉलेज नहीं थी। वट आई वॉज टेस्टेड वाज कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, मैं गेस एस्टिमेट कैसे सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्या मैं एनालिटिकली सोच पा रहा हूँ प्रॉब्लम को या नहीं। एंड बेस्ड ऑन दैट आई वाज हायर्ड। मेरे स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ जो था पूरा, उसमें मेरे को मास्टर कार्ड पूरा कैसा कंपनी का हमारा फ्लो है, कैसे मास्टर कार्ड काम करती है, कैसे इसके प्रोडक्ट्स काम करते हैं, हमें पूरी इसकी बस ब्रीफिंग कराई गई, क्या क्या बेसिक टर्म्स होते हैं, ये पूरा हमें पढ़ाया गया। अब मेरा क्योंकि इसमें 1 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आई एम इन अ स्टेज जहाँ पे मेरे पूरे बेसिक्स पता है। तो आई हैव बीन शिफ्टेड टू एन अनदर प्रोजेक्ट जहाँ पे अब मेरे से काम करवाना स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग। So I know a basics. Best thing is कि I'm adopting to a new environment and I'm like now building the products. And for fifth is growth mindset. Growth mindset is like you should never feel like क्या मैं इसमें master हूँ. You should always have a learning attitude कि आज मेरे पास कुछ अलग set of challenges हैं, अगले दिन मेरे पास कुछ अलग set of challenges होंगे जिसमें कोई और person और अच्छा हो सकता है, तो I need to learn from him. I should not have my egos कि यार I am the best person and I should not ask anyone for help. So product management is something where you need to ask a lot many favors from different teams. That could be like advertising team, advertising your particular features, the way they are advertising. या UX UX designers जहाँ पे आप बताओगे कि यार this is my important feature और मैं चाहता हूँ कि इस पे प्राइम फोकस आए, तो UX UX डिजाइनर जो होगा वो देखेगा कि इसको मैं कहाँ प्लेस कर सकता हूँ जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्शन है। Like talking of like not taking it long, like I know थोड़ा बोरिंग होते जा रहा होगा, तो these are like some of the problems or some are deterministic problems जो आप हम normally सोच सकते हैं, that is acquisition that is कि मैंने एक ad रन किया, ad रन करने पे सपोज 1000 लोगों ने देखा और सिर्फ 10 लोगों ने डाउनलोड किया, तो ये एक एक्विजिशन की प्रॉब्लम है कि यार आज मेरा जो एक्विजिशन रेट है वो 10% है, तो मैं इसको अब इम्प्रूव कैसे करूंगा। तो आप देखो कि यहाँ पे कंटिन्यूसली स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है, यहाँ पे कभी भी आपका टास्क कंप्लीट नहीं होता।
तो आप जितने अच्छा परसेंट तक इम्प्रूव कर पाओगे, दैट इज द सक्सेस रेट. ऑर्डर मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, लाइक दीज आर द डिफरेंट डिटर्मिनिस्टिक एरियाज जहाँ पे आप प्रॉब्लम सोच सकते हो. लाइक सप्लाई चेन, ऑर्डर मैनेजमेंट, लाइक हाउ फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आप ऑर्डर मैनेजमेंट के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ऐसे ऐसे आते हैं कि दिवाली दिवाली इज अराइविंग सपोज, एंड यू जनरली हैव अ नोशन कि यार दिवाली में हर कंपनी के अच्छे ऑर्डर्स जाएंगे, बट यू सी कि अचानक से आपके ऑर्डर्स में डिप आना स्टार्ट हो जाता है इन डिस्पाइट ऑफ राइजिंग. तो अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैनेजर को वेरियस वेरियस प्रॉब्लम सोचनी पड़ेंगी कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से डिप हो सकता है. एंड दैट कुड बी ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स. एक हो सकता है कि एक्सटर्नली आपकी कंपनी ने कुछ एंटी रिलीजन या एंटी कुछ नोशन में बोल दिया हो जिसकी वजह से आपकी इमेज गिर गई हो या एक पर्टिकुलर सेगमेंट को हर्ट हुआ हो. इट कुड बी कि आपका जो टूल था जो रिकॉर्ड कर रहा है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, आपका सर्वर डाउन था. तो भाई इसमें बहुत वेरियर और बहुत वास्ट फील्ड है और काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसमें आपको कंटिन्यूसली सोचना होता है कि लाइक कैसे मैं इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ. तो इसका बेस्ट नोन एग्जांपल जो मैंने अभी लिया था दैट वाज कि लास्ट टू लास्ट ईयर फ्लिपकार्ट में बेटिंग स्टार्ट हो गई थी एंड अचानक से दे सॉ कि 20% उनके सेल्स में डिक्रीज आ गया. एंड यू नो 20% इज अ वेरी बिग नंबर. तो eventually the product managers figured it out कि उनके उसमें क्योंकि betting स्टार्ट हुई थी, they started bidding for different products. तो that was against the guidelines of Play Store. तो उनका जो Play Store से almost like 6 to 7 या almost 2 to 3 days के लिए उनका प्रोडक्ट जो फ्लिपकार्ट ऐप था वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते थे. तो इसके लिए उन्होंने अपनी बेटिंग हटाई, उसको कैसे मॉडिफाई करके उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि वो गाइडलाइंस के अंदर आ जाए. सो दिस वाज होल्ड अ रोल ऑफ अ प्रोडक्ट टीम इन अ कंपनी. एंड लाइक whatever you'll say कि आप जो भी प्रॉब्लम बताओगे, इट वुड नेवर बी कंपनी आपको ब्लाइंडली विश्वास कर लेगी. वो हमेशा एक डाटा से बैकड अप होने चाहिए. दैट कुड बी यूजर रिसर्च, सर्वेस या उनके जो डाटा सिस्टम्स होते हैं. तो बेसिकली जो डाटा ड्रिवन जो आपको रिपोर्ट्स देंगे वो होते हैं बिजनेस एनालिस्ट. तो वहां से आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं और वहां से आपको पता चलता है कि क्या जो मैं प्रॉब्लम सोच रहा हूँ वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है. So that's all like a brief intro on internships. So I'll end up with a notion to do what you love and not what you're forced into. Thank you. So let's have any questions like you guys would like to have. The event was very nice, Arjun. It was so thoughtful. मुझे बहुत सारे डाउट्स है. I'll ask, but किसी और के कोई डाउट्स है? So we'll consider that first. Any doubts? Okay, so I'll ask. Arjun, हमार अभी तुमने बोला कि we have to do many internships, we have to apply, कैसे connect करना. But what I did, मैंने एक या दो कंपनीज को अप्लाई किया. नहीं, I applied for 3 companies, but मुझे एक से रिप्लाई आया, but they didn't continued further discussion. And then मेरा वो searching stop हो गया. So applying for 3 companies is enough? No, like I'll say कि जितनी ज्यादा से ज्यादा कंपनीज पे अप्लाई करना कर सकते हो, कैपेबिलिटी होती है उसमें करना चाहिए. एट दी एंड बेसिकली क्या है कि अगर हमें 10 कंपनी से ऑफर रोल आउट होता है तो उसमें कोई हार्म नहीं है. बट अगर एक भी जगह से ऑफर नहीं आएगा, दैट कुड बी अ पोटेंशियल कंपनी कि जहां से आपको आ सकता था. और दैट इज फॉर एग्जाम्पल आपने 3 कंपनीज में अप्लाई किया, सपोज यू लेफ्ट 4th कंपनी कि मैं ऑलरेडी 3 कंपनीज में अप्लाई कर चुके हो. अब आपको पता चला कि 2-3 में से सिर्फ एक कंपनी ने रिप्लाई किया और उसने भी कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाके उसे मे बी कहीं और से कुछ बेटर कोई कैंडिडेट मिला होगा तो उसे आपको ड्रॉप कर दिया. अब सपोज एक 4th कंपनी एग्जिस्ट करती थी जहां पे आप एक परफेक्ट कैंडिडेट थे, सारे स्किल सेट जो आपके थे वो वहां से मैच हो रहे थे और वहां पे आपका हायर होने का काफी फेयर चांस था. बट आपने बस जस्ट बिकॉज आपने 3 कंपनीज में अप्लाई कर दिया था इसलिए आपने 4th में अप्लाई नहीं किया, तो दैट वाज रॉन्ग. तो ऐसे कि जितनी भी ओपनिंग्स दिखती जाए सब में अप्लाई करो, मैक्सिमाइज करो जितना भी अप्लाइंगे एंड टॉक टू डिफरेंट मैनेजर्स कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. एंड जितना आप ज्यादा पर्सनलाइज कर पाओगे उतना ही ज्यादा आपके चांसेस ऑफ कन्वर्जन होंगे इंटर्न्स. Okay. I'll even get for more. Arjun, like one or two people are having doubts. Yeah. First doubt is from Viraj Ratadia.
Yeah, he is an EXTC student, like second year EXTC student. So, Krunal, they like, don't understand EXTC, electrical or electronic. yeah, Okay. electronic student. Fine. Okay. So, like, he wants to know that if he applies for a company, like, if he applies for a computer company, like the specifically computer engineering related firm, Okay. but afterwards he wants to apply or sit for a placement in his own core domain. Fine. Okay. So, like, will the company help? Like, will the internship help him for his placement? Like, can he add the experience there? So just to clarify, is it the internship is in same domain in which he wants the placement? No, it's not in the same domain. Like, the internship is in the computer thing, like the software thing, but he wants to get placed. Like, if he changes his mind during the Domain. placement, like till the placement. So, Yeah. yeah, will it help? I'll say like it would help till not that very great extent. Basics जो होते हैं, for example, I'll say कि for example वो core में उसने intern करी अपनी, and he's looking for a placement in software intern in software company. So that company exposure would be teaching him some basic skills, that is like team coordination, team player. These skills would be very well looked upon in that placement, but he needs to have some experience in that company in which he's looking for. For example, अगर वो सॉफ्टवेयर के लिए देख रहा है तो उसे सॉफ्टवेयर में एटलीस्ट प्रोजेक्ट्स या कोई क्लाइंट्स देख सकता है, या अपने कॉलेज के एलुमनाई से बात कर सकता है जहाँ से उसको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, और वो प्रोजेक्ट्स उसको अपने सीवी पे रखने होंगे, बट ही शुड डेफिनेटली शो कि उसने एक इंटर्न करी हुई है. दैट इज फर्क नहीं, लाइक कंपनीज को फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने उनकी डोमेन में करी है दूसरे डोमेन में करी है. इट्स मेनली फोकस्ड ऑन कि क्या आपके पास सूटेबल एक्सपीरियंस या सूटेबल स्किल्स हैं जो उनके लिए वो यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे कि अगर आप जैसे कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटर्न करते हो और आप तो इंटर्न इज नॉट कि आपने अगर इंटर्न कर ली तो इट इज कि आपको अब उसी डोमेन में जाना है. इंटर्न इज जस्ट एन एक्सपीरियंस कि आपने एक एक्सपीरियंस करके देख लिया कि मैं ये फील्ड सोच रहा था, क्या ये मेरे लिए फिट है कि नहीं है. तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि अब आपको अगर जैसे पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इट इज अ वेरी ग्रेट थिंग आई से कि काफी लोग को लोग फिगर आउट ही नहीं कर पाते हैं कि उन्हें जाना कहाँ पे है. तो अगर जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटर्न कर ली, कोर इंटर्न, और आपको पता चल गया वो काफी बोरिंग है, आपके इंटरेस्ट की नहीं है और आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हो, तो व्हाट आई से आप फोर्थ ईयर में सॉफ्टवेयर के बेसिक्स जो आप कोर्सेज हैं वो करो. और मेन है उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जरूर रखना, दैट इज आप रियल टाइम प्रोजेक्ट सॉल्व करो, रियल टाइम इंटर्न्स करके देखो, और रियल टाइम इंटर्न्स आपको बहुत मिल जाएंगी. और अगर आपको लाइक कहीं भी नहीं मिलती है, आपको लगता है कि यार कोई स्कोप नहीं बच रहा है, तो बेस्ट थिंग इज आप अपने कॉलेज एलुमनाई से अप्रोच करके देखो. तो कॉलेज एलुमनाई हमेशा बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि वो भी एक स्टेज पर आपके वाले पॉइंट पे ही होंगे, तो उन्हें भी काफी स्ट्रगल किया होगा, तो दे नो कि यार मेरे कॉलेज के जूनियर्स हैं, तो दे डेफिनेटली हेल्प इट आउट. तो दैट इज सम ऑफ द बेस्ट थिंग्स. तो ऐसे कि जब आप प्लेसमेंट के लिए अगर सॉफ्टवेयर के लिए जाओ, तो मेक श्योर कि आपके रिज्यूमे पे सॉफ्टवेयर की भी एक्सपीरियंसेस मेंशन्ड हो along with that electronics as well, कि that company sees कि आपकी decision making process है and you're not into just going just to get an intern or just to get a placement. Am I able to answer Okay, the question? I hope he might have got it. Okay, the second question is from Aryaman. Aryaman Jain, and he's from second year computers. And his question is like, if he's doing internships now in the second year, but if like due to some reason his grades are not that great, like he can surpass the company thresholds. So will it matter? Like will the internships like make a different view for the recruiters? So we'll have like divide this case into two parts, an off campus and an on campus. So given like on campus interns, so in on campus interns or placements, you always have a CGPA requirement. So even if you are able to just fulfill that threshold which you mentioned in your question, you are good to go, and like you will be the best candidate, will be having the best advantage amongst all your peers, just because that company has a real-time candidate who has experienced similar roles. So that would be really very benefiting you. If I talk of off campus, so I'll say CGPA does not matter in that. Only experience matters in off campus interns, or even placements. They look for whether you're able to code well or not.
and they don't like care about whether you know the basis of architecture or not. Like the skills they don't like, they won't be even viewing your academics. It is just for the on-campus interns that you need to clear out that threshold. Like I remember Arista is one of the company that comes with a CGPA cutoff of 8. So a majority of coders were not able to sit in my college just because they were not having an 8 CGPA. So you need to you need to ensure कि CGPA से threshold clear हो जाए. अगर threshold clear हो रहा है तो you're good to go. Okay, great. So next question is from Ritika Pillai. Yeah, she's again from second year comms, and her question is like the internship. The internship she is doing, like she is currently pursuing an internship in a startup. So like doing internship in a startup to a well-known developed firm, like which one will be better for like placements or something for a future? Got it. तो इसके like again बहुत ये wide question है. तो I'll say कि अगर आप start कर रहे हो उस particular domain में तो start with the startups. जैसे अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट का जितना स्टार्टअप से सीखा है उतना मैंने बड़ी ब्रांड जिसमें मैं काम कर रहा हूँ मैंने उसमें बिल्कुल उतना नहीं सीखा है. और बड़ी कंपनीज में हमेशा आपको टास्क दे दिए जाएंगे एंड यू विल बी एक्सपेक्टेड टू वर्क. और छोटी कंपनीज में जैसे स्टार्टअप्स जो होते हैं उसमें हमेशा आपको सिखाया जाएगा. तो लर्निंग जो होती है स्टार्टअप में बहुत ज्यादा होती है. और तो आपको सबसे पहले सीखना है तो आप जरूर स्टार्टअप ज्वाइन करो. व्हेन यू आर वेल कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्किल्स कि यार हाँ आप मेरे को कोई भी टास्क दे दो आई विल बी एबल टू टैकल इट वेल, देन स्टार्ट ज्वाइनिंग बिगर फर्म्स. बिकॉज if at in later point of time you will always be known for working in a bigger brand. Like best example is ki everyone wants to work at Google, no one wants to work at startups. So most of the engineers you will see like I met some of the engineers in Gurgaon but they had initial experience of 2 to 3 years in a small startup in which I guess you won't be even knowing the name. Even I haven't heard their startup's name ever. They worked for 2 to 3 years in that particular startups. They gained experience, they gained all that technical skills, and then they joined Google, and Google easily accepted them. They were not my roomie in the Gurgaon was a Googler. He openly told me that he was not having a proper like even a 6 pointer. He was not even a 6 pointer. He was from a tier 3 college. Like he didn't even have any of that gold star which you can show on the internet or like on your resume. And still he's in Google in SD3. I remember. So he told कि उसका जो startup में उसने सीखा है वो experience ही actually अब उसको Google use कर रहा है. तो startups आपको सिखाएंगे और बड़ी कंपनीज उसी एक्सपीरियंस को यूज करेंगे. तो यही एक डिफरेंस आता है. तो अपेरेंटली अगर आप जैसे कंसल्टेंसीज में घुसना स्टार्ट करोगे तो कंसल्टेंसीज में हमेशा बड़ी ब्रांड्स पे टैग देखा जाता है आपके पास कितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स पे आपने काम किया हुआ है. तो आई से कि आप कॉलेज एक ऐसा फेज है जहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं देखा जाएगा. तो आप जितने स्टार्टअप्स हो सकते हैं वहां से आप अपनी स्किल्स एकदम पॉलिश कर लो एंड इवेंचुअली यू कैन टेक प्लेसमेंट्स इन अ बिगर कंपनीज. लाइक अगेन लाइक इफ वी टॉक ऑफ काफी फैक्टर्स होते हैं स्टार्टअप्स के. ऑफिसेस कह सकते हैं अच्छे नहीं होते, वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती या वहाँ पे एक स्टेबिलिटी नहीं है. और आज में भी एक स्टार्टअप है मे बी वो 1 साल बाद स्टार्टअप ना रहा तो आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती. वेराज बड़ी कंपनीज पे ये सारे फैक्टर्स अलॉन्ग विद फैसिलिटीज ऑफिसेस लंच फ्री मील्स काफी सारी फैसिलिटीज होती हैं. तो ऐसे कि पॉलिश स्किल्स करके आप अगर आप बड़ी कंपनीज में जाओगे तो यू विल बी एबल टू स्टिक एंड प्रोग्रेस वेरी वेल. Okay, so next question was asked on YouTube. What are the main day-to-day responsibilities involved in the internship? That is like highly subjective question and like that depends on what the role is. For example, He's talking about your internship. okay, so in product management intern, we have a daily morning call at 10 o'clock. So at 10 o'clock, we need to like present, we need to show what we have built yesterday, what we have thought. Out that call is for 10 to 10:30, in which my managers are like telling me what are the daily tasks, what they give me the daily doables. After that, from 12 10:30 onwards, I need to like work on those doables. So again, like I'll say that those doables are not exact to the point. Like they won't be having an close answer to that. That those are open-ended problems. So I need to research on the internet, like what could be the possible solution. I need to think whether my solution would make sense or not. I need to make a proper documentation for that particular feature. Like right now, I'm working on competitors analysis in a okay, that's some secretive thing.
So I'm working on some technology that Pine Labs is going to roll it out. So I need to currently do a market analysis of like what different brands are offering, what are their offerings, how someone is able to capture the audience, or like what are the users, why is that my audience using that particular feature. So I need to figure it, all these things out throughout my day, and I need to make a report, daily report in the evening, and we'll be having a daily report, daily call in the evening with different teams. I need to present my hypotheses. Like I think these could be the use cases. So so based on those use cases, it would be debated in the evening call. That is with the product team. If I'm in the next stage, if we have like already given the PIDs, that is the product requirement document. We'll be having a daily requirement with the engineering team. They'll be discussing it about कि सर आपने ये हमें फीचर्स दिए थे, ये फीचर्स में से ये तो एप्लीकेबल नहीं हो सकते. देन यू नीड टू डिबेट ऑन कि लाइक व्हाट इज द नीड, इज इट लाइक दिस फीचर्स रियली नेसेसरी. क्योंकि क्या होता है कि कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं, बट उनको बनाने में बहुत टाइम लगेगा. तो आपके अगर जैसे आपने एक बहुत अच्छा फीचर बनाने वाले हो जिसको बनाने में आपको 6 मंथ्स लग गया, और उससे आपके मेट्रिक्स जो है वो 10% ड्राइव करें, कंपेयर टू आप एक ऐसा फीचर जो एक नॉवल फीचर था जिसको बनाने में 1 मंथ लगा और आपकी मेट्रिक्स सपोज 6% मूव करी. तो कंपनी वुड ऑलवेज ट्राई कि आप स्मॉल फीचर्स को, स्मॉल प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, जिससे आप मेट्रिक्स को कंपैरेटिवली ज्यादा मूव कर पाओ कंपेयर टू बिग प्रोजेक्ट. तो हमारे इस पे पूरा डिस्कशन रहता है. तो थ्रू आउट द डे मेरा काम रिसर्च पे रहता है, बहुत ज्यादा रिसर्च पे रहता है, और डिस्कसिंग और मीट्स पे लाइक अच्छा खासा टाइम स्पेंड होता है. एंड लाइक वर्क इज लेस हेक्टिक, तो एट मैक्स लाइक 3 to 4 hours a day मेरे को डिवोट करना पड़ता है. Arjun, Arjun, like one question. I know that that is a secretive thing, but I know that you are working in 2 internships at a time. I So was like, that has ended. right now, acha, ended. Okay, so maximum times you work in 2 internships at a time. So are you able to handle your academics and internship? Oh, I Whom know. do you give more preference? Got it. So like whenever I'm taking 2 interns at a time, I make sure that is in the summer break, so I don't have academics pressure. Like currently when academics is present, I'll always take a single intern, that too which is less hectic, because academics are very hectic in our college, especially in electrical, those core branches. So I'll say ki I devote like 80-20 in the normal time. 80% interest, like my time would be in intern, 20% would be in academics in the normal days. During the time of exams, I take an off from the company itself. Like in my Vine lives, I took a 10 days off for my exams, for 5 days to prepare and next 5 days to give the exam. It was well balanced. But I'll Okay. never as per my personal experience, I'll never recommend to take 2 interns at a time. Like it's really very hectic and we can't manage. Okay. One question from Karthik Suvarna. He is from second year INF team, like information technology. Okay. So his question is like, which is better, like starting own startup or working in another person's startup? So which one is better? I'll say first, if you are like thinking of having your own startup, you are a visionary person, and that is really something that our country needs. So what you should do is ideally do is like this is what I'm going to state right now is something which my seniors told as per their experience, who were having their own startups. So they told he work in other startups, get to know what are the procedures, what are the methods, what are the implementations, how do how does a particular thing works. After getting a suitable experience in that particular field, then open your own startup after you feel you are well stable enough to like fund people, fund your own startup. You can get fundings and all. So get suitable experience from different startups, learn those work, how to do that work. Make sure that you know each and every work, because workforce is clever and they could make fool out of you. They could charge high amount and do nothing. So you need to take all that account, and that would be gained only after you work in different companies. So I'll say work in other startups, gain experience, understand how things works, and eventually when you are well go through when you are like well versed with all the processes, open your own startup. Okay, great. So another question is again from the YouTube. Hello Arjun, I am from
ECE branch, electrical and communication, Yeah. and do not have any prior knowledge of what skills should I have to get internship in core company, and also do not have any idea of how to learn them. What should I do? So the person is from ECE branch, and he doesn't have any idea of like how to get an intern, and doesn't he thinks like he doesn't have any skills. So the best like for core branches, I'll say that core branch for placements in core branches, it is very much college specific. Like if a core company is coming to your college, then your chances of getting placed is very high. But I have my roomie is a person who is into core, and he tells me the scenario like in the colleges where the core companies are not coming, the chances of getting an off-campus placement even is really very tough. So I'll say go talk to your professors, talk to them what skills are required, because those professors would definitely be having some industry contacts. So they'll help you get the right knowledge. They'll help you get the right company too. Like the same problem I'm suffering right now. Like our college is completely filled with techies, and I am somebody who wants to get out of the tech. And I asked my professors that I want help. So they said that if they get something like that, we'll help you. The domain I want. And still I'm in the search of on Internshala or on the LinkedIn, and still I'm applying. So this can be a good the person if you are in this meeting, then go apply on some other platforms because it's very difficult, like you said. Yeah. Like one of the like if that person like again coming back to this EC person, if he's not aware of like what skills he needs to have, look for what job profiles are existing in the like market. Go on LinkedIn, search with that particular profile name. You will get tons of profiles in which people would be working on that particular profile. Connect with them, communicate, like ask them, you are not like you are clueless. They'll guide you very well. Are there any more questions? No. Okay. Arjun, that this was the session I wanted, and very happy to see you again. Thank you so much for coming just on a single call. Thank you so much for this time. I know you don't have time, still you gave. And I hope कि और भी ऐसे हम लोग आगे मिलते रहे. I'll come sometime there, you come here, and definitely we will be having a great time together. And guys, thank you so much for attending this event. I hope you got much insightful knowledge about internships. And thank you, Arjun, for being here. Welcome, Nandini. Nice to meet you all. So, with this, we'll end the meeting. Thank you. Thank you.